Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Market Mantra. Namaskar and welcome to this Monday edition of Market Mantra, the program in which we give you a complete update on the economic news of the day. And friends, today we shall also be taking calls from you on any queries that you may have on economic, business and stock market news. But please do remember that we do not address company-specific queries. Well, you may call us on the numbers 23314444, 23717106 and 23421050. And if you're calling us from outside Delhi, please don't forget to add 011 as a prefix to these numbers. I am Lalima Aneja Dang and with me is my co-anchor in Hindi, Nikhil Shukla. नमस्कार, मार्केट मंत्र में आप सभी का स्वागत है। प्रतिदिन की तरह कार्यक्रम में ताजा आर्थिक समाचार हम आपके लिए लेकर आए हैं। आज सोमवार है और कार्यक्रम में आपके सवाल भी हम शामिल करेंगे। आर्थिक, व्यापारिक और शेयर बाजार से जुड़े किसी भी विषय पर आप हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं। आपको बता दें कि कार्यक्रम में हम किसी कंपनी विशेष या स्टॉक के बारे में जानकारी आपको नहीं दे पाएंगे। टेलीफोन नंबर 23314444, 23717106 और 23421050 पर आप कॉल करके हमसे प्रश्न पूछ सकते हैं और आपके सवालों के जवाब देने और चर्चा के लिए स्टूडियो में आमंत्रित हैं रूरल वॉइस के संपादक हरवीर सिंह जी। हरवीर जी, कार्यक्रम में आपको बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद। और सबसे पहले हेडलाइन के साथ में है लालिमा। Thank you, Nikhil. Yes, the headlines first. Domestic market scale new all-time highs for third straight day. Sensex gains 211 points. Nifty rises 50 points. Global markets in Asia and Europe witness broad sell-off after protests in China, and global crude oil prices plunged to its lowest levels this year. Brent slumps 3% below $81 per barrel. घरेलू शेयर बाजार कारोबार में लगातार तीसरे दिन अपने उच्चतम स्तर पर पहुंचा। सेंसेक्स में 211 अंक की बढ़त, निफ्टी में 50 अंकों का उछाल। चीन में विरोध प्रदर्शन के चलते एशियाई और यूरोपीय शेयर बाजारों में तेज बिकवाली और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमत इस वर्ष के अपने न्यूनतम स्तर पर 3% की गिरावट के साथ $81 प्रति बैरल। और सबसे पहले शेयर बाजार पर नजर डालें तो लगातार पांचवें सत्र में सेंसेक्स और निफ्टी ने बढ़त का रुख बनाए रखा और कारोबारी हिसाब से लगातार तीसरे दिन घरेलू शेयर बाजार में बढ़ोतरी देखी गई। चीन के शहरों में कठोर कोविड नीतियों के विरोध प्रदर्शन के बाद हुई बिकवाली और ब्रेंट कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट के चलते ये बढ़त देखी जा रही है। वैश्विक शेयर बाजारों से मिले जुले रुख के चलते आज मुंबई शेयर बाजार के सेंसेक्स में 211 अंक यानी कि 0.3% की वृद्धि हुई और ये अपने उच्चतम स्तर 62,505 पर पहुंच गया। वहीं नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी भी 0.3% की बढ़ोतरी से 50 अंक ऊपर चढ़कर अब तक के सर्वोच्च स्तर 18,563 पर बंद हुआ। विस्तृत बाजार की बात करें तो बीएसई मिड कैप इंडेक्स 0.7% लाभ में रहा, जबकि स्मॉल कैप इंडेक्स 0.8% ऊपर आ गया। Rising for the fifth straight session, the Sensex and the Nifty continued its record-breaking streak for the third consecutive day today, despite global sell-off amid protests in major Chinese cities against strict COVID policies. Led by the gain in oil companies due to lower crude prices, Sensex at the Bombay Stock Exchange rose 211 points or 0.3% to close at a fresh closing high of 62,505. Nifty at the National Stock Exchange advanced 50 points or 0.3% to an all-time high of 18,563. In the broader market on the BSE, the mid-cap index added 0.7% and the small-cap index was up 0.8%. In the Sensex pack, 15 companies ended in green while 15 registered losses. Reliance was the top gained with a surge of 3.4%, followed by Nestle and Asian Paints at 1.4%. Among the losers, Tata Steel, HDFC, Airtel declined over 1%, while Maruti and M&M dropped 0.5%. Among the BSE sectoral indices, oil and gas and energy indices gained the most at 1.5% each.
The auto index rose 0.6%. The FMCG index advanced 0.3%, and the healthcare and realty indices were up 0.2% each. Among losers, metal index declined most at 1.5%. The consumer durable index lost 0.3%, and the power and telecom indices dipped 0.2% each. The IT, banking, and capital goods indices ended almost flat. In news-driven counters, Hero MotoCorp rose 3.5% to an over 2-month high after announcing a price hike on its motorcycles and scooters from December the 1st to offset costs related to inflation. Max Financial Services advanced 2.6% after it announced that it will purchase Mitsui's Sumitomo's balanced 5.17% stake in Max Life. So, Harviji, we see now Sensex at 62,000 plus. Major question. Overview of this. How do you view it? India is on a roll economically. If Sensex is a barometer of the economic success of a country. Yes, actually, I think Indian market has a lot of interest, and FIs are also coming to the Indian market. We have seen this is a decoupling from the global market trends Indian market has right now. We are seeing. One thing is that because domestic, a lot of savings surplus going to the stock market, and in the expectation that investors will get good return, and the number of regarding the economy, we are still in the range of 7% when major economy in the world are either some contracting or growing at a very low pace, including the second biggest economy like China. The growth is not very impressive as numbers are being projected. So in that scenario, if the continuously last 3 session market is growing and today it has gone up and then closed at a record high. So it is a good sign for Indian market. और इस बीच हमारे साथ में आज के हमारे पहले श्रोता, पहले कॉलर जयपुर से जितेंद्र जुड़ चुके हैं हमारे साथ में. हेलो. हाँ नमस्ते जितेंद्र जी, स्वागत है आपका. प्रश्न पूछिए आपका. अच्छा, हमारा जैसे प्रश्न ये है कि जैसे एनपीए में काफी सुधार हुआ है, बैंकों का स्थिति काफी सुधरा है जी. क्यों ना वित्त मंत्रालय जो आरबीआई के माध्यम से जैसे वो सीबीआई या सीआईडी या रॉ की तरह मतलब पहले ही घटना दे दे कि ये चीज हो सकता है या कोई फ्रॉड हो सकता है, ऐसा कोई बन नहीं सकता है क्या एजेंसी? देखिए, जो बेसिकली एनपीए होता है कि कोई एसेट जब रिकवरेबल ना हो, खराब हो जाता है, रेट ठीक से वापस नहीं आता क्रेडिट आपका, और कंपनी जो है वो डेट सर्विस नहीं कर पाती, उसके एक सर्टेन नॉर्म्स है. ये जरूरी नहीं है कि उसमें कोई फ्रॉड या गड़बड़ी की गई होगी. तमाम सारे इकोनॉमिक फैक्टर भी होते हैं उसके पीछे. तो ये उसको आप हमेशा एक क्राइम की तरह से नहीं देख सकते. और ये एनपीएस कम हुए हैं, उसका बहुत बड़ा रीजन है कि सख्ती हुई है. और जो आईबीसी जो है, इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोर्ट का जो प्रोसेस शुरू हुआ है, एनसीएलटी बना है, ये एक प्रोसेस है पिछले कुछ वर्षों में जो हुआ. और ये एक अच्छा काम है क्योंकि बैंक्स जो है वो जो उनका बैड डेट्स है या उस तरह का जो एसेट्स है उससे छुटकारा पाके एक रास्ता निकलता है कि नया इन्वेस्टर आ जाए. तो देयर आर मल्टीपल फैक्टर बिहाइंड दिस दैट एनपीए इज कमिंग डाउन. Also the fact that the government has given liquidity, has put liquidity into the banks, that also kind of gives it a little soft. No, actually, government has recapitalized the banks. Yeah, that is one aspect. But in case of NPA, basically bad debt, where you have given the credit and the company is not servicing or it is become NPA. So, but definitely if the overall banks capital is high, the ratio will go down. So there are many factors behind it. But to run a bank, you need capital. You need for that liquidity. So it is important, and so continuous support was given by the government. हरवीर जी, थोड़ा सा लौट करके हम शेयर बाजार पर फिर से आते हैं. तो नवंबर में विदेशी निवेशकों ने तगड़ी खरीदारी की है, पैसा लगाया, और जो अगस्त और सितंबर में हमने बिकवाली देखी थी, अब ऐसा हमने नवंबर के महीने में नहीं देखा. और कल कारोबारी इस महीने का अंतिम दिन होगा. तो ऐसे में अगले महीने के लिए, दिसंबर के लिए क्या एक्सपेक्टेशन की जा सकती है, खासतौर पर जो विदेशी निवेशक हैं उनके लिए? असल में देखिए कि देयर आर मल्टीपल फैक्टर्स जी. आप ये देखिए कि अभी जो है, जो फिर से
यूएस से कुछ मैसेज वेडनेसडे को आएगा पावेल का, तो वी हैव टू वेट फॉर दैट। सो उसमें अब जो सेंट्रल बैंक्स का मनी टाइटनिंग का जो एक प्रोसेस चल रहा है और इन्फ्लेशन क्योंकि नीचे आ रहा है, तो उसमें क्या स्लो होगा प्रोसेस या कब तक रिवर्स होगा, ये सारे ऐसे फैक्टर हैं। बिकॉज मार्केट जो है उसमें जैसे आपने खुद भी कहा है कि जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है एफआईज एफपीआईज, उसका बहुत बड़ा रोल है इसमें, और उनको लगा दिस द वैल्यू बाइंग है उस वक्त, इसलिए उन लोगों ने पैसा लगाया। बट पीछे एफआईज एफपीआईज ने भी क्वालिफाई किया था, बट उसका डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस और जो डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स थे वहां से लगातार उसमें इन्वेस्टमेंट का फ्लो आता रहा। सो दैट इज स्ट्रेंथन इंडियन मार्केट, और जो बेस है इन्वेस्टर बेस वो काफी बड़ा है हमारा। All right, we're now joined by Ravi calling us from Delhi. Once again, let me announce the numbers anyway, friends. You can call us on the numbers 23314444, 23717106 and 23421050. Now it's over to Ravi, our caller. जी, सवाल पूछे जी। हेलो रवि, आप हमें सुन पा रहे हैं? लगता है उनसे हमारा संपर्क टूट गया है। हरवीर जी, थोड़ा सा और इस पर नजर डालते हैं शेयर बाजार पर। जो आज के हालात हैं, वैश्विक हालात जो हम देख रहे हैं, कहीं ना कहीं भारतीय शेयर बाजार को इसका फायदा हुआ है, लेकिन अन्य जो देश हैं उनको इतना फायदा नहीं हो पाया है। नहीं, एक्चुअली देखिए दो फैक्टर होते हैं, डोमेस्टिक फैक्टर क्या है और आपका इंटरनेशनल फैक्टर्स क्या है। तो वो दोनों चीजें, जैसे हमारा जो है वो ग्रोथ है, हमारी जो कंपनीज के प्रॉफिट्स हैं वो भी बढ़ रहे हैं, तो अगर आप इंडिविजुअल स्टॉक्स को देखेंगे तो वहां पर फिर लोगों का अट्रैक्शन उसमें आता है। फिर ये है कि रिटर्न फैक्टर क्या है, उसमें जो इन्वेस्टमेंट आपने किया उसके ऊपर कितना आपको किस पीरियड के अंदर कितना आप रिटर्न ले पा रहे हैं, तो उसमें फिर इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट होता है। तो ये फिर एक कंपैरिजन होता है। इन्वेस्टर्स भी जो बड़े फंड्स हैं, जो ग्लोबल इन्वेस्टर्स हैं, दे ऑल्सो कंपेयर डिफरेंट मार्केट्स, लाइक कि हम लोग इमर्जिंग इकोनॉमीज के मार्केट्स में आते हैं, जिसके साथ आपका ब्राजील है, रशिया है, साउथ अफ्रीका है, चाइना है, उनके कंपैरिजन में इंडियन मार्केट इज डूइंग वेल। सो डेफिनेटली इन्वेस्टमेंट विल कम टू आवर मार्केट इन दैट कैलकुलेशन। When we compare ourselves to China, China is going through a very bad phase. There are protests against the lockdowns and COVID virus from where there, supposedly it originated from there. Now it's back to haunting that place. People are protesting. Does it mean advantage India also because our production costs are low? We have a huge surplus of manpower and labor force and cheap labor force. Does it mean with China at in this condition, it is advantage India for manufacturing? Actually, one thing I want to say that manufacturing is a very long process, and to set up a unit for manufacturing, what kind of products we want to manufacture. So, but at the same time, what kind of products we are producing and there is a demand in the market, definitely we are on the advantage side, and this is not a good sign from China because. Very strict lockdowns are basically annoying the population, and we have seen the reports are coming today of huge protests are erupting all over almost in many parts of the China, and it disturbs the manufacturing process. Like recently there was a problem in an Apple manufacturing unit also. So if that kind of problem will occur regularly, it will affect the supply chain. And companies who have put up their plant there, and if they see that their disruption may come anytime, so definitely they must be looking for other destination. And we have attracted some investment, like we are producing Apple phone now in India, and the company expanding its capacity. So we can see many other products also, like the company may set up production units in our country. That will be a very good investment opportunity for India. But these are a very long-term thing. If company thinks in the long run, we have to wait and see, because COVID lockdowns happened worldwide, and now, as you said, that's coming back to China. In the last few months, China went into this lockdown things and very strict lockdowns. Yes. We have seen worldwide there's some reports and videos are coming from China of very strict lockdowns. So that is affecting everything, disrupting the not only life but the business also. Yes.
इस बीच दिल्ली से चंद्रिका जुड़ी हुई हमारे साथ में। हेलो। हाँ जी सर, मैं चंद्रिका बोल रही हूँ। जी, आपका प्रश्न पूछिए। सर, एक प्लॉट बेचा है हमने, तो उसका पैसा हमने बैंक में कब तक रख सकते हैं, और अगर हम दूसरी प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो वो प्रॉपर्टी भी हम कितने टाइम तक रख सकते हैं बैंक में? जी देखिए, इसमें आपका कैपिटल गेन टैक्स का इशू है, और आपको जो आपने बेचा है, एक तो कैलकुलेशन होगा कि कितना आप इसमें गेन होता है। ये अगर दूसरी प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करते हैं 2 साल के अंदर, तो फिर आपको अगर उतना, एक तो कैपिटल गेन टैक्स आपका जो एप्रिसिएशन होता है उसके पूरा अमाउंट पे नहीं लगता, उसका एक इनकम टैक्स एक्ट में प्रोविजन है, उसमें आपको एक सर्टेन रिबेट भी मिलता है। तो वो पैसा अगर जितना बनता है उसको अगर आप टैक्सेबल को आप फिर से रीइन्वेस्ट करेंगे प्रॉपर्टी में, तो फिर आप इससे बच जाएंगे, आपके ऊपर ये कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। बट वो स्ट्रिक्टली होता है, आपको अलग अकाउंट खुलवाना है, उसमें ये पैसा जाएगा। एंड आई थिंक जिसको आपने बेचा उन्होंने टीडीएस भी आपका जमा किया होगा, तो दैट कैन कम बैक टू यू। बट एक प्रोसेस है, और ये हमारा जो इनकम टैक्स के जो प्रोविजन है उसके तहत ये सब आ रहा है। हरवीर जी, एक इसी से जुड़ी बात मेरे मन में आ रही, मैं सोच रहा हूँ आपसे पूछ लेता हूँ। यदि कोई किसी गृहिणी के नाम पर इन्वेस्ट किया जाता है, जैसे उन्होंने पूछा मुझसे, तो मतलब यहाँ पर पूछा, हमसे सवाल पूछा, तो क्या उसमें कुछ एक्स्ट्रा रिबेट भी मिलते हैं? नहीं, देखिए, जो इनकम टैक्स में जो प्रोविजन है उसके लिए कि एक तो टैक्स रिबेट का एक लेवल है बस, ऐसा तो फिर अदरवाइज तो बाकी कैलकुलेशंस तो होंगी, जो प्रोविजन है वो तो जेनरिक सबके लिए है। जी। Well, I should have asked that question, Nikhil. You took my question. और एशियाई बाजारों पे हम नजर डालते हैं तो अधिकांश एशियाई शेयर बाजारों में आज गिरावट का रुख देखा गया। चीन का शंघाई कंपोजिट इंडेक्स 0.8% के नुकसान में रहा। हांगकांग का हैंग सेंग 1.6% लुढ़क गया और जापान का निक्केई 0.4% नीचे आकर बंद हुआ। दक्षिण कोरिया का कॉस्पी 1.2% टूट गया और सिंगापुर के स्ट्रेट्स टाइम्स सूचकांक ने बिना किसी खास उतार चढ़ाव के कारोबार किया। यूरोपीय शेयर बाजारों की हम बात करें तो अंतर्दिवसीय कारोबार के दौरान यहां भी गिरावट का रुख देखा गया। लंदन का FTSE 100 0.7%, फ्रांस का कैक 1% और जर्मनी का डेक्स 1.1% नुकसान में चल रहे थे। एशियाई बाजारों के आज ये हाल रहे, तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, एशियाई बाजार तो एक तो जो ग्लोबली उससे प्रभावित रहे हैं, और हमने देखा कि चाइना फैक्टर का काफी असर था, जिससे हमने कहा शुरू में कि इंडियन मार्केट बेसिकली डिकपल्ड फ्रॉम दैट काइंड ऑफ सिनेरियो व्हाट वाज हैपनिंग इन द वर्ल्ड वाइड मार्केट। सो naturally these markets are getting affected because they're very closely linked with China, all these economies, if you see whether it's Japanese economy or Korean economy. And one should not forget that China is one of the biggest economy in the world. Anything happen to China have implication for everybody all over the world in any economy. What about the fact that European markets are also going through a bad phase? They will also have their fuel issues and other problems. Now the winters are approaching. They will not have fuel thanks to no thanks to the Ukraine-Russia war. How do you view the European markets functioning now? Actually, European countries are facing a big problem on inflation front. Inflation, exactly. And one of the reasons is that this energy inflation, gas prices and fuel prices, because they depend a lot on Russian supply. And it is on and off also. They cannot stop it, but they have sanctioned against Russia. So, actually, this winter is not really good. It's very bad for European countries because they need more and more energy. Temperature goes sub-zero level and they need heating and all these energy resources is much more. That's why. And even growth prospects are not really good in big European economies. Are we, India, now exporting more diesel to the European countries? And does it mean that it's good for India in a way, I mean, oblique way? No, actually any export is good for the country. So we used to continuously export petroleum products. We have refineries by private sector and the imports crude and exports refined products to global level, even the US also and European market also. And maybe some of them have advantage on the crude prices front and able to make more money.
और रुपए पे नजर डालें तो अंतर बैंकिंग विदेशी मुद्रा बाजार में रुपया डॉलर के मुकाबले 2 पैसे की मजबूती से 81 रुपए 67 पैसे प्रति डॉलर के स्तर पर बंद हुआ। हरवीर जी, ये ऐसे अनुमान लगाए जा रहे हैं कि जब अमेरिका में ब्याज दर में वृद्धि कम होगी तो रुपया अपने आप ही स्थिर होने लगेगा। हालांकि स्थिरता लाने के लिए सरकार अपनी तरफ से सारे प्रयास करती है, लेकिन वो जो फैक्टर है उसका कितना असर आप देखते हैं? हाँ, देखिए क्या है कि रुपया फ्री फ्लोटिंग में है और बहुत ज्यादा इंटरवीन इसमें नहीं किया जाता, बिकॉज उसके लिए हमें अगर रुपये को मजबूत रखना हो तो आर्टिफिशियली मैं कहूंगा तो देन वी हैव टू पंप द डॉलर इन द मार्केट। उससे हमारा फॉरेक्स रिजर्व पे असर पड़ता है। सो ये बात सही है कि वहां पर जब ये इन्फ्लेशन कंट्रोल होने के चांसेस बढ़ रहे हैं और जो डर था उनका यूएस इकोनॉमी का रिसेशन में जाने का वो भी कम हो गया है और वहां इन्फ्लेशन नीचे आई है। और एट द सेम टाइम अगर हम देखें हमारे यहाँ भी इन्फ्लेशन नीचे आई है। होलसेल इन्फ्लेशन काफी समय के बाद सिंगल डिजिट में आई है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो 7% से नीचे आया है। सो ऐसा जो ग्लोबल रेटिंग एजेंसीज हैं उनका कैलकुलेशन है कि रुपया हो सकता है कि 80 के आसपास आगे कुछ महीनों के बाद, जो आप फैक्टर्स कह रहे हैं उन चीजों को फैक्टर इन करते हुए सो रुपया सुधर सकता है। इसमें एक जी बोलिए। तो उसका डेफिनेटली हमारे लिए बड़ा इम्पोर्टेंट है। और एक तो स्टेबिलिटी फैक्टर है करेंसी का, दूसरे के जो हमारा जो इम्पोर्ट बिल है उस पे इससे सीधा असर पड़ता है। अगर रुपया स्ट्रांग होगा तो वो पॉजिटिव असर डालता है। सो हमारा जो इम्पोर्टेड इन्फ्लेशन जिसे हम बोलते हैं उसके ऊपर हमें कंट्रोल करने में मदद मिलती है। तो यहाँ पर दो चीजें, जैसे कि अमेरिका और भारत की अगर हम ब्याज दरों को देखते हैं तो बहुत एक बड़ा गैप सामने हमारे नजर नहीं आता है। ऑलमोस्ट लगता है कि शायद एक दूसरे के आसपास ही इस तरह से होती हैं सारी चीजें। और अब भारत ने ट्रेड रुपए में करने के लिए कोशिशें अपनी शुरू कर दी कि हम ज्यादा से ज्यादा अपना ट्रेड अब कोशिश करेंगे कि रुपए में ही हम करें, डॉलर में ना करें। देखिए, जाहिर सी बात है कि अगर हम बायलैटरल ट्रेड जिन देशों के साथ सहमति हो सकती है और वहां की उनकी करेंसी और रुपये में करेंगे तो हमें उस वक्त डॉलर की जरूरत नहीं होगी। तो जाहिर सी बात है कि ये करेंसी का जो एक्सचेंज रेट है उसके ऊपर पॉजिटिव असर डालेगा। तो ये कोशिशें हो रही हैं, रशिया के साथ हम लोग कोशिश कर रहे हैं और कुछ और देशों के साथ भी इस तरह के प्रयास हैं। और कुछ बैंक्स ने इस बारे में पहल की है, बिकॉज आरबीआई इज अलाउड, बट उसके लिए जो आपको नॉर्म्स हैं, जो कंडीशंस हैं, उनका पालन करना है। एंड मोर ये डिपेंड करेगा हमारे एक्सपोर्टर्स के ऊपर जी, क्योंकि उनको जो एक्सपोर्ट करना है, फिर जो पर्टिकुलर कंट्री है उसके साथ हमारा एक्सपोर्ट इंपोर्ट का क्या है। अभी जैसे रशिया के साथ हमारा अच्छा है, बट अभी क्या हो रहा है कि रशिया के साथ हमारा एक्सपोर्ट उस तेजी से नहीं बढ़ रहा है जितना हमारा इंपोर्ट बढ़ रहा है, ड्यू टू एनर्जी और फर्टिलाइजर प्रोडक्ट्स की वजह से। रीजन है क्योंकि वहां वॉर के चलते अनसर्टेनिटी थोड़ा है और जो प्राइवेट जो एक्सपोर्टर है वो बहुत सारी चीजें फैक्टर करते हैं कि हम सप्लाई करेंगे तो पेमेंट्स का कैसे होगा, क्या नहीं होगा। तो अगर ये चीजें स्मूथ हो जाती है तो डेफिनेटली ये जो ऑप्शन है रुपये में ट्रेड करने का, ये काफी बेहतर साबित हो सकता है। Harveer ji, talking about trade, we recently had free trade agreements with UAE and Australia. In fact, Australian Parliament ratified the ECTA to upgrade it to CECA. A little bit of a jargon there. What does it imply for the economic situation in our country? We also have negotiations going on with other countries like the UK, European Union, Canada and the Gulf for free trade agreements. What exactly do these free trade agreement treaty implications have for our economic situation? Actually, when we do these bilateral free trade agreements, so we give some facility or some concession to our partner country, and they also gives us in terms of duty structure and trade facilitation and ease of doing trade. And even now there are talks about human resources also, so that Indian can go there and they can work there. This visa issues are also there. And UAE is one of the very big trade partner, because UAE is not just these 3-4 countries. It is a hub. It is a transit hub for many countries. We export there and re-export or
other partners come there to import from that place, like African countries and even some Asian countries where we don't have direct trade. So they also import from Indian products from those places. So definitely it's very important. And there are some product lines where we have given concession and they are also giving concession to us. So in that case, our exports become competitive there. Yes. And you talked about human resource. Well, a lot of our IT professionals are spread all over the world doing their work and bringing dollars to our country through their information technology skills. Well, we are now joined by Keshav calling us from Delhi. जी केशव सवाल पूछें. हेलो जी सवाल पूछिए जी. हाँ जी, ये मैं पूछना चाहता हूँ कि अगर स्टूडेंट है तो स्टूडेंट के लिए अगर उसके पास 10 लाख रुपए इन्वेस्ट करने हैं तो सही रास्ता कैसे होगा, इसके बारे में कुछ राय देंगे. स्टूडेंट के लिए इन्वेस्टमेंट फॉर स्टूडेंट्स, assuming investment for students, the parents are doing the investment for students. It depends, a student or any individual student want to invest. So definitely if a student has such kind of surplus, investable surplus of 1 million, so he can go to the stock market also through, I'll suggest this SIP route, or you can go for FDs or some small saving deposits. There are good interest rate earning also there. गुरुग्राम से राकेश जुड़े हमारे साथ में. हेलो राकेश जी, आपका प्रश्न पूछिए. थोड़ा सा संक्षेप में क्योंकि समय हो रहा है. राकेश जी. हाँ बिल्कुल. गुड इवनिंग. जी. Question is the banking sector, especially I am finding the public sector banks like State Bank and other banks also, Bank of Baroda, etc., and private sector banks also, ICICI and Axis Bank. They have sufficiently appreciated. I mean, they rallied and the prices have gone up. So where do you see that? There is still steam in the rally, or they are reaching the top, or what is the... Ji. Yes, banking sector is doing well, and we have seen a huge jump in the profit margin of the banks. So it means that in a growing economy, when credit growth is good, net interest margin is good. So if banks' balance sheet is looking healthy, so it means that there will be more and more interest there from investors into the banking stocks. Right. Let's take a look at oil now. Global crude oil prices fell to their near lowest levels this year today as street protests against strict COVID-19 curbs in China, the world's biggest crude importer, stoked concern about the outlook for fuel demand. Brent crude oil futures plunged $2.66 to $80.97 a barrel after diving over 3% to $80.61, its lowest since January the 4th. U.S. crude slid $2.39 to $73.89 a barrel after falling to $73.60 earlier, its lowest since December 22nd last year. Both benchmarks, which hit 10-month lows last week, have posted 3 consecutive weekly declines. Markets also appeared volatile ahead of an OPEC Plus meeting this weekend and a looming G7 price cap on Russian oil. मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज में सोने का दिसंबर वायदा भाव 108 रुपए बढ़कर 52,652 रुपए प्रति 10 ग्राम पर चल रहा था. दिसंबर अनुबंध वाली चांदी भी 109 रुपए चढ़कर 61,785 रुपए प्रति किलोग्राम के स्तर पर कारोबार कर रही थी. उधर न्यूयॉर्क मर्केंटाइल एक्सचेंज में सोना बढ़त के साथ $1,773.10 प्रति औंस पर था. चांदी भी ऊपर आकर $21.64 प्रति औंस पर कारोबार कर रही थी. और दुग्ध उत्पादन की अगर हम देश में बात करते हैं तो श्रोताओं आपको बता दें कि देश में पिछले 8 वर्ष में दुग्ध उत्पादन में 8 करोड़ 30 लाख टन की बढ़ोतरी हुई है. वर्ष 2013-14 में दुग्ध उत्पादन 13 करोड़ 80 लाख टन था, जो 2021-22 में बढ़कर 22 करोड़ 10 लाख टन हो गया है. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस उपलब्धि पर कहा है कि डेयरी क्षेत्र में क्रांतिकारी बदलाव से नारी सशक्तिकरण को बढ़ावा मिलेगा. और विद्युत मंत्रालय ने शक्ति नीति के तहत 5 वर्षों के लिए कुल 4,500 मेगावाट बिजली खरीद की योजना बनाई है. इस योजना से बिजली संकट से जूझ रहे राज्यों को मदद मिलेगी और योजना के तहत बिजली की आपूर्ति अगले वर्ष अप्रैल से शुरू होगी. Well, on that note, thank you, Harveer ji, for coming to the studio and spending your precious time with us and updating us with your views. Well, friends, before we close, here's a reminder of the headlines. Domestic markets scale new all-time highs for third straight day. Sensex gains 211 points. Nifty rises 50 points.
Global markets in Asia and Europe witnessed broad sell-off after protests in China. And global crude oil prices plunged to its lowest levels this year. Brent slumps 3% below $81 per barrel. Well, that's all we have for you in this edition of Market Mantra. This is myself, Lalima Aneja Dang, and my co-anchor, Nikhil Shukla, signing off. Namaskar. Namaskar. Market Mantra.